a substance or a compound which get used up first during the reaction first during the reaction and will decide quantity of product. So limiting reagent means a substance which is present and which get used up first during the chemical reaction and will decide quantity of product. Usko ही limiting reagent or else LR we can say. So let us understand this thing by using any chemical reaction. So for example, if we are writing hydrogen react with chlorine, it will give you twice of HCl. Okay, before doing any limiting reagent question, the reaction should be balanced. तो इसको भी हमने बैलेंस कर लिया और ये वो सब्सटेंस है जो रिएक्शन में सबसे पहले खत्म हो जाएगा एंड विल डिसाइड द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट. करेक्ट? So let's say we have this hydrogen is reacting with chlorine will give you the twice of HCl. So based on the mole concept, we say 1 mole of hydrogen reacting with 1 mole of chlorine and will give you the 2 moles of HCl. But suppose question दिया है कि है ना 2 moles of hydrogen is mixing with the 3 moles of chlorine, find the quantity of product of HCl. तो देखो सबसे पहले तो स्टाइक्योमेट्री ही लेनी है कि that 1 mole of hydrogen is utilizing 1 mole of chlorine. So it's very obvious कि if we are using the 2 moles of that, chlorine will also use 2 moles only. It will not use 3 moles. तो ऐसे भी निकाल सकते थे कि 1 mole hydrogen is utilizing the 1 mole of chlorine. So 2 will utilize the x mole of chlorine. Correct? तो यूनिटरी मेथड से भी निकालोगे तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन आ गया. बट दिया कितना है 3 दिया है तो इसका मतलब है कि ये एक्सेस में दिया हुआ है. हमको चाहिए कितना था सिर्फ 2 चाहिए था लेकिन दिया कितना है 3. सो द अदर वुड बी द लिमिटिंग रिएजेंट जो पहले ही खत्म हो गया. 2 मोल्स हाइड्रोजन विल गेट यूज्ड अप फर्स्ट जबकि क्लोरीन के सिर्फ 2 मोल यूज होंगे और 1 मोल एक्सेस में पड़े रहेंगे. So I'll write here the left chlorine would be 3 minus 2 would be is equal to 1. Correct? ये unreacted बची रही. अब हमारा क्वेश्चन है कि what could be the product formation? What is the moles of the HCl? तो फिर से limiting reagent will decide the quantity of product, right? तो यहाँ देखो 1 मोल कितने मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है HCl के 2 मोल्स. So let's write again. 1 hydrogen is producing the 2 moles of hydrogen chloride HCl. So question में हमारे को दिया हुआ है 2 moles. So 2 mole of hydrogen will give you the x mole of HCl. Apply the unitary method. Now by the crisscross method x would be is equal to 2 2s are 4. 4 mole of HCl formed. So that's how we should understand कि पहले आप स्टाइक्योमेट्री लिखो और फिर गिवन थिंग्स जो क्वेश्चंस में है उसको अप्लाई करके get the limiting reagent and then find the quantity of product, which is this. Let's do the one more question based on that limiting reagent base. तो चलो लेते हैं. Suppose it's given 2 moles of nitrogen mixed with 3 moles of hydrogen to get ammonia.
तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट. Quantity of product, or we can say the left quantity of or unreacted quantity of excess reagent. Quantity of excess reagent. चलो let's see. तो पहले हमें बैलेंस इक्वेशन लिखना होगा. N2 plus H2 will give you the twice of ammonia. 3 is here. So 1 mole of nitrogen is reacting with 3 mole of hydrogen will give you the 2 mole of ammonia. Nitrogen 2 हो गए, hydrogen 6, and so this reaction is balanced. So stoichiometry is telling 1 mole of nitrogen reacting with 3 mole of hydrogen will provide the 2 mole of ammonia. That is the standard stoichiometry. But question में आते हैं कितना दे रखा है, 2 moles दिया हुआ है, इसका 3 moles. So let's write this is 2 mole is given and that is 3 mole is given. We have to find which one is a limiting reagent. हमेशा याद रखना limiting reagent you need to find when all the reactant value is given in the question. अगर एक की दे रखी है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर सारे reactant का वैल्यू दे रखा है तो limiting reagent निकालना it's compulsory now. Okay, so this is the standard and this is the given thing. So 1 mole of nitrogen is utilizing 3 mole of hydrogen. So 2 mole of nitrogen will give you the x mole of hydrogen. Let's divide. तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई हमारे पास 6 moles. इसका मतलब हो गया कि 2 moles of nitrogen को कितने moles चाहिए, 6 moles चाहिए. 6 moles needed. बट गिवन कितने हैं, 3 ही गिवन है, लेस गिवन है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा. एंड दैट शुड बी द एक्सेस रिएजेंट. नाउ द डेफिनेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट कि इट विल डिसाइड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट. तो ये देखो 3 मोल्स पे कितने मोल्स जा रहे हैं, 2 मोल्स. सो लेट्स राइट 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन is giving you the 2 mole of ammonia. So in the question 3 mole of hydrogen is given. Okay, the same thing is given. So we have a direct answer 2 moles. अगर वैसे समझ नहीं आ रहा है तो यूनिटरी मेथड लगा दो. डिवाइड किया, x would be is equal to 2 mole of ammonia is formed. तो आंसर आ जाएगा 2. तो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट हो गया 2 moles. लिमिटिंग रिएजेंट हो चुका है हमारे पास हाइड्रोजन. एक्सेस रिएजेंट हो चुका है नाइट्रोजन. एंड लेफ्ट क्वांटिटी कितनी हो गई है हमारे पास, तो देखो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज यूटिलाइजिंग 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन. तो यहाँ भी 3 दिया है, मतलब इसका 1 यूज हुआ होगा. तो 2 ओरिजिनल था, 1 यूज हो गया. आंसर में कितना आ गया, 1 मोल. ये बचा हुआ है लेफ्ट क्वांटिटी. एंड दैट्स हाउ यू विल गेट द आंसर. कभी कभी क्वेश्चन में इसको मोल्स को ग्राम में भी पूछ लेते हैं कि भाई क्वांटिटी पूछा है तो ग्राम में आंसर बताओ. तो अमोनिया का मास होता है, सो वी कैन राइट मोल्स वुड बी इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय द मोलर मास. तो मोल्स आ चुके हैं हमारे पास 2. मास ऑफ अमोनिया W एंड मोलर मास इज 17. तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा 34 ग्राम ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड. तो जब भी क्वांटिटी दी हुई है तो क्वांटिटी का जनरली यूनिट हम ग्राम में ही लिखते हैं, अनलेस अंटिल वो पूछे नहीं कि मोल्स में आंसर निकालो, विल गो विद द ग्राम. 34 ग्राम ऑफ अमोनिया is going to be formed.